So this is something that we all knew is coming either one way or the other. So I mean, this was quite obvious. So as we can see that 275 more Chinese app on India's radar. The list include PUBG and Reso. So I'm not aware about Reso, but I am very much quite aware of PUBG because nowadays it has become, nowadays it has become a household name, and every parent is aware of this name because it's a cell phone gaming application. सो बहुत लोगों के लिए, बहुत ही माँ बाप के लिए चिंता का विषय भी बन सकता है और बन चुका है, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ पबजी खेलते हैं एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन देयर स्कूल, देयर कॉलेज और समटाइम्स देयर जॉब. आई हैव सीन पीपल, मतलब मैंने भी प्री पैंडेमिक अपने ऑफिस में देखा है लोगों को, दे केप्ट ऑन प्लेइंग इन देयर ब्रेक्स, और कभी कभी लोगों ने मीटिंग मिस कर दी. आई डोंट नो व्हाट्स सो अडिक्टिव अबाउट दिस गेम. आई विल नेवर अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आई एम नॉट ड्रॉन टू प्लेइंग गेम्स दैट मच. And at the same time, this can be, or this will be a bad news for gaming community in India, because जब भी मैं YouTube सर्फ करता हूँ, so I see these days all the millennials and teenagers or teenagers भी, उनसे बड़े भी लोग, I mean the professional gamers community, that I must say. So most of these people have built up their career while playing this app. They have a very big fan base और उनके फॉलोअर्स बहुत ढेर सारे हैं. सो उनके लिए दिस वॉज काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम एंड सोर्स ऑफ अर्निंग. और तो इस वजह से दिस विल बी अ कंसर्न फॉर देम एज वेल, बिकॉज अगर ये पबजी बैन हो जाता है परमानेंटली इन इंडिया, so that will be a problem for them as well. So either they should look for other alternatives, or Indian government should think about them as well. But at the same time, this can also be considered, or this should be considered as an opportunity for Indian tech company and these like local tech companies. जो इंडिया में जितनी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं, गेमिंग इंडस्ट्रीज है, if this happens and like 59 apps have been banned, so उनके alternative के लिए काफ़ी applications market में आ गए, app store में available हैं, and they are booming, they are doing good. And in a way, what I feel, in a sense, Indian government is promoting their own techies, Indian techies, कि you should start this. We should not be that much dependent on the Chinese market, जैसा कि पहले हो रहा था. So I think the Indian tech company and Indian tech community should consider this as an open opportunity and open invitation from the Indian government that now we have laid down all the paths for you. Make the best out of this opportunity.